Good morning, everyone. Welcome to Prebell with Team William on India. Today, October 8th, 2024, and please go through the disclaimer. Okay, let's begin with Nifty 50 setup. So, tough days for the index. So, yesterday was the sixth consecutive day when we traded lower, and it was not about only the count that 6 days, but it is about the quantum. So you look at the quantum with which the market was going down. Okay. So here you look like, okay, there were continuous maybe 12 days of rally, but it was just a 1,000 point rally. But within 6 days, you might see somewhere around 1,500 points of fall in Nifty. So that is huge. So yesterday we have breached 50 DMA as well. So now the index is below the 21 as well as the 50 DMA. Plus the volume on the selling is also on the higher side. Okay, so this is about what happened. Now, what to look out for. So yesterday we discussed about this level that this is very important, 753. वो हमने ब्रीच कर दिया, ठीक है, बट क्लोजिंग उसके ऊपर आया है. सो आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट विल बी यस्टरडेज लो, जो कल का लो था अराउंड 700, एंड अगेन क्लोजिंग अबाउट दिस 750. सो दो चीज ध्यान में रखनी है, एक तो 700 को इंट्राडे ब्रीच नहीं करना है, और दूसरा क्लोजिंग बेसिस पे 750 के ऊपर अपने को क्लोजिंग चाहिए. ये दो चीजें, ठीक है. अभी वहां से भी अगर नीचे आया, इफ इंडेक्स गोस बिलो दैट लेवल आल्सो, देन आई थिंक दिस विल गिव अ वेरी वेरी गुड सपोर्ट. जो 24 300 400 वाला जोन है 100 DM है, वहां से एक बार रिबाउंड रैली 500 700 पॉइंट का बनता है, और द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिवर्सिंग फ्रॉम देयर बिकम्स हायर. ओके, एंड फॉर टुडे आई थिंक दिस लेवल्स दैट आई डिस्कस, 700 के नीचे जाना नहीं चाहिए, और 750 के ऊपर क्लोजिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट. ऑन द फ्लिप साइड, आई थिंक ऑन द हायर साइड व्हाट यू आर लुकिंग फॉर इज द 25,000. कि अगर कैश में निफ्टी 25,000 के ऊपर ट्रेड करता है, तो वहां से एक ट्रेंड रिवर्सल हम देख सकते हैं. जो येस्टरडे का हाई है, उसके ऊपर अगर हम निकल के बंद हो गए, देन there is almost a confirmation of a reversal, और वहां से we might see some 200 500 points rally from there. Okay, so next, if you see few news, then Brent crude has raised above $8.80 per barrel, and this is for the first time since August. So यहाँ पे इंडियन मार्केट्स के लिए काफी नेगेटिव हो जाता है जब भी क्रूड ऑयल में एक शार्प इंक्रीज होता है, एंड दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेटर ऑफ escalating issues in the Middle East, because most of the crude comes from the Middle East only. And if you see that, okay, there is some issues over there, the crude will be higher. But अभी हमें दिख रहा था वो 80 के अराउंड ही ट्रेड कर रहा है, कभी नीचे जा रहा है कभी ऊपर जा रहा है. So let's see if it stabilizes around 80, then that will be good for the Indian market. Then HG acquired 8.23% stake in its competitor GrafTech International for 248 crore. Nykaa's Q2 net revenue is expected to grow in the mid 20s. That's what they have given the update. BEL has secured orders worth more than 500 crores since September. And yesterday there was a huge selling by FII, 8,000 crore के ऊपर. But उसके ऊपर a record breaking buying by the DIIs. But then also the market was down. So looks like the retailers are selling the stocks, or they are not buying it. So that's what is happening in the market. So very volatile. I think you need to be a little bit away from the intraday trading, from the short-term trading. But yeah, if you have some good investment picks, long-term picks, SIP types of stocks, okay, then you can definitely watch out for them. So yesterday, even the US market was looking a bit on the weaker side. The Dow, S&P, Nasdaq all down on an average 1%. Okay, this morning, the Shanghai was up around 5.6%. Nikkei was down 1.2%. Okay, I think there is some mistake in Kospi. Yes, the Kospi is down around 0.5%. So you consider this as a negative.
0.5%. सो एशियन मार्केट एंड यूएस मार्केट, वहाँ पे थोड़ा नेगेटिविटी है, ठीक है। सो लेट्स सी हाउ द थिंग्स गोज फ्रॉम देयर। बट SGX निफ्टी में काफी रिकवरी आई इन द मॉर्निंग। आई थिंक व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस प्री-बेल एंड ऑल, रीडिंग फ्यू आर्टिकल्स, वी वर बिलो 24,900, आई थिंक 24,850 के अराउंड था। एक डेढ़ घंटे पहले गिफ्ट निफ्टी, बट वहां से ऑलमोस्ट 150-200 पॉइंट्स का एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी हमको देखने को मिला है। और अभी गिफ्ट निफ्टी 25,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो इट इंडिकेट्स अ म्यूटेड ओपनिंग। ऐसा कोई गैप अप ओपनिंग नहीं मिलेगा, बट या वी आर एक्सपेक्टिंग अ म्यूटेड टू पॉजिटिव ओपनिंग। 40-50 पॉइंट इधर उधर हो सकता है। ओके, बट देन लेट्स सी इफ वी कैन होल्ड द गेन्स, या फिर वो फिर से गिव अप कर देते हैं, वो देखने को रहेगा। स्टॉक ऑफ द डे, very tough to get a stock in this market which is holding well. But I think if you look at the housing finance, the Aptus value housing finance, यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिला वीक मार्केट में, एंड दैट्स व्हाई आई लव सच स्टॉक। जो वीक मार्केट में ताकत से खड़े होते हैं ना, दे कैन बी द लीडर ऑफ द नेक्स्ट रन। So if you see the Aptus Value Housing Finance, the fund holding has increased, ROE of 14%, recent results consistently good. ओके, EPS स्ट्रेंथ ऑफ 91 इज एक्सेलेंट। अगर आप चार्ट पैटर्न्स भी देखें तो बहुत बहुत ही अच्छा एक एक्यूमुलेशन मिला है। देखो यहाँ से हम अगर देखने को स्टार्ट करें, ये वाला रैली, ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन हुआ था। उसके बाद जो ये पूरा करेक्शन आया, देखो इट वाज ऑन अ सुपर लो वॉल्यूम, आई थिंक हाफ द वॉल्यूम देन एवरेज। ठीक है, अभी फिर से जब ये रैली हुआ, तब यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा। फिर 4-5 दिन ये थोड़ा घटा था, 21 DMA को टेस्ट किया, तो ये नीचे रहा, वॉल्यूम लो था। और अभी 2 दिन से जब मार्केट गिरे जा रहा है, सो येस्टरडे, सॉरी ऑन द फ्राइडे इट क्लोज्ड एट डेज हाई। येस्टरडे भी इसमें अच्छा मोमेंटम रहा, and the volume was higher on both the days. So I think I'm not saying today it will break out, it will give big move, but if it consolidates, pullbacks over here again, जब ये breakout होता है higher volume पे, that is when you need to watch it out. EP price trend थोड़ा poor दिख रहा है 54, but if you broadly look the way it is trending higher, okay, then there is no issues over here. So this stocks look good to be in the part of your watch list. So that's it for today's session. Thank you for joining. See you again tomorrow at 8:45 a.m.